Hello guys, welcome to b2netcode.channel.com. So in today's video we are going to do installation of Windows 10 on VMware virtual machine. For my viewers this session will be in Hindi as well as in English. ओके ताकि हमारे हिंदी व्यूअर्स और इंग्लिश व्यूअर्स दोनों इस वीडियो को समझ सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर ना अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। So let me open the VMware workstation. So here I will create a new virtual machine और ये मैंने एड्रेस दे रखा है Windows 10 ISO का। ओके, so it says Windows 10 x64 is detected. So VMware easy install technology को use करेगा that will help us to install Windows 10. Okay, so let us click on next. विंडोज़ प्रोडक्ट की अभी हम नहीं डालेंगे। आई विल सिलेक्ट विंडोज़ 10 प्रोफेशनल और इधर हम कुछ भी नाम डाल देते हैं। लेट्स से विंडोज़ 10 क्लाइंट। ओके, विंडोज़ 10 क्लाइंट 1 और ये हम डिफ़ॉल्ट रखेंगे लोकेशन और ये वर्चुअल मशीन का नाम चेंज कर लेते हैं। लेट्स मेक इट विंडोज़ 10 डैश क्लाइंट 1। ये लोकेशन सेम रहेगी। लेट्स क्लिक ऑन नेक्स्ट और ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन ऑफ हार्ड डिस्क एंड साइज ओके ये वही रहेगी और हम मल्टीपल डिस्क्स में इसको रहने देते हैं। नाउ लेट्स पावर ऑन द वर्चुअल मशीन आफ्टर क्रिएशन। नाउ दिस इज इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डिस्क। So I'm using Camtasia software for this video. Okay, please bear with me if you are getting disturbed because of this watermark. ये सभी स्टेप्स के थ्रू जाएगा। कॉपिंग विंडोज फाइल्स, नाउ गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन, currently at 79, 89, 90%. Guys, depending upon your hardware configuration the speed will vary. I have i7 machine so मेरा ये जल्दी हो गया। Okay, now let's restart the machine. Working on updates around 30% complete. One more restart. Okay, now setting up apps. One more restart. Okay, now uh, we got the desktop. Okay, since password तो कोई दिया नहीं so it should log in quickly and we can enable this. We can click on yes.
Okay, easy. VMware tools have been installed. That's why we are able to see the full screen. Now, after the installation, the first thing that we need to do is check the updates. Okay, because whatever updates have been pushed by Microsoft, they should be installed. So we can see that there are a lot of updates that have already been pushed by Microsoft. So we need to install them before going ahead with Windows 10. Okay. So depending upon the ISO, my ISO is a bit old, so that's why it will download all the updates. Okay. And also make sure that Windows Defender is always on. It's a real-time protection and cloud protection should always be on. You don't need to use any third-party antivirus. We'll be using Windows Defender. And I have activated as well. I have put the product key. In case you want to change, you can click on change product key and you can put your product key from here. Okay, we are not using any developer features. Now let's try to enable desktop icons. For that we'll go on themes and here we have desktop icon settings. तो ये डेस्कटॉप था, ये हमारा आ गया डायलॉग बॉक्स. सो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे कंप्यूटर, whatever things we need: computer, network, recycle bin and control panel. These are the things I need at minimum on the desktop. Now let's get back to Windows Update, see what is the progress here. ये देखिए काफ़ी सारी ये अपडेट्स हैं, सिक्योरिटी अपडेट्स है, विंडोज़ डिफेंडर्स की अपडेट्स हैं, और विंडोज़ की फीचर अपडेट्स हैं. सो ये सारी हमें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी. एंड वी हैव VMware अपडेट ऑल्सो. So let's install all of them. Let's give it some time. Guys, always make sure that whenever you install Windows, always keep it updated, because जो भी ये वायरसेस वगैरह मार्केट में आते रहते हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए our Windows Defender should be updated. And these icons I don't need, so I will be removing all of them. And let's keep Edge and OneNote. These are the things I am not going to use on my machine, so I can safely remove them from here. अगर बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो इन्हें uninstall कर देंगे. Office is required, so I'll be using Office. Next video में मैं आपको Office install करके दिखाऊंगा. So for now, let's make our Windows 10 installation complete before that. And one more thing I want to show you: whenever we click on this file explorer, it goes on quick access. Okay, I want that it should show me this PC, जिसे हम पहले my computer बोलते थे. It is called this PC now. So we can go from view options, folder options. From here I can select open file explorer to this PC. Click on apply. OK. If you want to view the settings, you can check from here. तो देखिए अब हम जाते हैं फाइल एक्सप्लोरर में, तो ये सीधा दिस पीसी पे जाएगा. ओके, दिस इज द लोकेशन आई ऑलवेज वांट टू सी व्हेनेवर आई click on folder my explorer. Okay, and one more thing, we can check the hardware configuration from this PC, right? This PC properties, we have Windows 10 Professional and 2 GB RAM. I have given 2 GB RAM. We can increase it later on if you want. And I want to change this computer name. Let's keep it something that I can remember. So यहाँ से let's click on change.
let's give it a name that I can easily remember. Windows 10 client 1 should be okay. ये वर्क ग्रुप रहेगा. दिस इज नॉट अ मेंबर ऑफ डोमेन. बाद में अगर डोमेन बनाने की ज़रूरत पड़ी तो हम ये बना लेंगे. तो अभी वर्क ग्रुप ही रखते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू रीस्टार्ट because our Windows downloads are getting downloaded. तो इसको बाद में रीस्टार्ट करेंगे. And you can see that Windows is activated, right? I have i7 CPU, so installation should not take so much time. Guys, if you want to use virtual machines, then you should have at least i5 or i7, and try to use SSD give you faster speed. और चलो ये Windows Smart Screen भी enable कर लेते हैं. This is a security feature given by Microsoft. कोई भी unrecognized app install ना हो पाए without administrator approval. This is the recommended setting from Microsoft. तो अभी इधर ये प्राइवेसी में कुछ apps देख लेते हैं. I will disable the apps that run in background, right? Yeah, if Microsoft wants to track the location, okay, I don't need to enable this. और कोई भी ऐप को मैं अभी परमिशन नहीं दे रहा to check my location, okay. ये कैमरा I'm not using, so I don't need to enable camera. I don't need to enable any app to access my camera. Microsoft also be कैलेंडर को भी हटा देते हैं और ये कॉन्टैक्ट्स को भी हटा देते हैं. Shell experience we can keep, but it's okay. I don't want any apps to access my calendar. So let's make it off. Messaging also. Radio I don't need. और कुछ देख लेते हैं कुछ है इसमें. अच्छा इसको भी ऑफ कर देते हैं क्योंकि मैं किसी और के साथ नहीं सिंक कर रहा. Feedback diagnostic, okay. And these are the background apps that will be consuming my RAM and CPU. So let's turn them all of them. I don't want them to run in background. इन सभी को ऑफ कर देते हैं. अच्छा let's see what is the status of Windows update. Still at 91%. Let's give it some more time. तब तक हम इधर देख लेते हैं कुछ और. Okay, let me check the startup applications. यहाँ पे हमें सभी सर्विसेज दिख जाती हैं जो विंडोज़ के स्टार्ट होने के साथ ही चलती हैं. ओके, क्योंकि अभी हमने कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करी है. सो ऑल दीज आर माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस. सो इट्स रिकमेंडेड नॉट टू डिसेबल देम, क्योंकि अगर हमें इन्हें ब्रेक कर डिसेबल कर देते हैं देन समथिंग विल ब्रेक. So I will recommend them do not mess with these services from here, okay. And if you want to see what third party applications are running, click on hide all Microsoft services. So currently we have only VMware service running. So because this is virtualized environment तो हमें VMware चलाना पड़ेगा. और स्टार्टअप में मशीन स्टार्ट होने के साथ ही क्या सर्विसेज चलती हैं वो भी हम देख लेते हैं. ये माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही मशीन बूट होगी. तो इसका स्टार्टअप इम्पैक्ट इज़ नॉट येट मेजर्ड बट आई कैन सेफली डिसेबल इट. और VMware टूल्स सर्विस हमें चाहिए, सो लेट्स कीप इट इनेबल्ड. Let's go to other tabs also.
यहाँ पे सारे प्रोसेसेस जो हमारी मशीन पे रन कर रहे थे हमें पता होना चाहिए. whenever you have any if your machine is hanging or not responding, okay, you can always check from here which application is consuming high CPU or RAM or causing problem for you. तो ये हमारा CPU यूटिलाइजेशन यहाँ से दिख रहता है. 13% is okay for me. एंड 2 GB रैम दी है, उसमें से 1.1 GB यूज़ हो रही है. दैट्स नॉट बैड. एंड डिस्क यूटिलाइजेशन हाई बिकॉज विंडोज डाउनलोडेड आर गेटिंग installed. Windows updates are getting installed. अभी इसकी यूटिलाइजेशन these apps Microsoft apps की कुछ खास नहीं है because this is the first time installation. अच्छा, all the executables that are running in our machine, okay, if we want to kill any process we can do that from here also. And guys, whenever you have any virus on your machine, okay, you should be able to find that from here. अगर कोई आपको ऐसी एग्जीक्यूटेबल exe फाइल दिख रहा है कि आपकी मशीन पे रन कर रही है, then you can always search on internet what that exe is all about. Okay, if you see that that is not something should be present, तो उसको किल करिए और देखिए if that program needs to be uninstalled. और ये सर्विसेज टैब है, सारी सर्विसेज हम यहाँ से देख सकते हैं. So right now everything is fine with me. The updates are still at 91%. Depending upon your internet speed, it will take time. I see that most of the updates have been downloaded, but they are waiting to install. नीचे थोड़ा देखते हैं कुछ. And guys, in case you want to know कि कौन सी अपडेट क्या करती है हमारी मशीन में, what is the use of that update, what kind of thing that update is fixing, okay, why was that released by Microsoft, we can always search on Microsoft website. So let's copy this and see what this KB is all about. Simply paste the KB number, and from support.microsoft.com we will get the more information about the update. ये अपडेट 2018 की अपडेट है, that was released by Microsoft. And ये files हैं that are getting updated, right? We have 64-bit operating system, so above files are applicable to us. Let's see a next update. This update size also seems to be very big. ये भी काफ़ी बड़ी फाइल लग रही है. चलो देखते हैं. Microsoft Update Catalog. This seems to be very old updates. 2017 की लग रही है, 2017 की अपडेट. But only 5.7 MB in size. Anyways, because Microsoft is pushing, so we have to install. Moreover, security updates cannot be ignored. Security updates save us from all the viruses and hacking attacks. Guys, whenever you reboot your machine, just make it a habit. First of all, you do the Windows update. You update your Microsoft operating system and install all the security updates, especially update your antivirus. Then you can keep your machine safe. तो ये cumulative update है. तो यहाँ पे in case you guys are interested what this update is doing, then you can go through this list.
Okay, install updates are getting installed now, 23%. Okay, it seems सभी download हो चुकी है. Now they are waiting to install. So they will be installed one by one. Now this one is installing. Let's give it some more time. 36% हो चुका है. 55, 62, 87, 96, 98, and here we go. Now restart has been scheduled, so now let's restart it. Okay, working on updates, 87% complete, and here we got the desktop. Guys, let's check once again if we have any pending updates or any update has failed. Guys, if you like this video, please click on like button. Updates install हो चुकी हैं, and subscribe to the channel. If you have any suggestion for improvement for me, click comment below. Okay. Next video हमारा आएगा installation of Office. Let me check the Windows version. Now we have build 10240. Guys, in case you are interested, you can check latest build available on Microsoft website. ये अपडेट अभी भी हमारी इंस्टॉल हो रही है. एक वन मोर इज देयर. चलो ये कर लेते हैं. तो लेटेस्ट 20H2 बिल्ड है जो इंस्टॉल हो रहा है, तो इसको हम कर लेते हैं, एंड आफ्टर दैट वी शुड बी गुड टू गो. और 20H2 हमारा इंस्टॉल हो रहा है, एंड दैट इज द लेटेस्ट, सो वी आर ओएस इज अपडेटेड. ओके, थैंक्स गाइस.